So today we'll discuss about the healthcare system in India. This is a part of actually community medicine. Probably I think from first year you have to study about community medicine, that subject. So basically, see, we maximum 90% of above 60% of the population lives in rural area in our India, na. So in urban area, healthcare system is much more developed, yeah, but still, na. But so we have to develop this. We should actually develop a healthcare system in rural areas also as well as in urban areas, like urban areas. But तो की oh अच्छा अच्छा बच्चे बच्चे see what is the definition of healthcare system in India? It implies the organization, delivery, staffing, regulation, quality control of the healthcare services. Okay. See, there are basically primary healthcare system now. There are we divided into three types. That primary, that basic essential healthcare, that secondary, specialized treatment, that tertiary high-end hospitals. Like you can see that AGMC is our tertiary hospital, okay, in Tripura. Huh? But what are the elements? Elements of primary healthcare system. We should know that. That first of all, that education, health education. Okay. Then local endemic disease prevention. That like that few days back that COVID came. You know that other all like given example some. What that disease prevention what like how you basically that how will you prevent the disease? Prevention is better than cure, we all know ना. That prevention के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? लोगों को educated करना in rural areas ना. Then essential drugs, that is also important. We have to supply the essential drugs in home to home, door to door step. You will visit, okay, in rural areas, and well, you all will be in third years. I think from second years also we will started in visit in rural areas. Then mother and child care, that is also important that our Asha Kurmis used to do, okay. Then nutrition supply, then treatment of common diseases like dengue, malaria, okay. Then safe water and sanitization. Safe water supply and sanitization is also important. Okay. Objectives of healthcare system: to improve the health status of population, because overall population. Okay. Then to improve the experience of care, reduce the economic burden of illness. Okay, that's why that government started that generic medicine. You know now all what is generic medicine, about generic medicine. That in our Ayushman Bharat, this is also a part of that how to reduce the economic burden of the illness, the poor people. The government of India wants to help the poor people. That's why he started the Ayushman Bharat. To improve the social justice equity. Social justice equity means anyone social justice equity? Okay, that social justice equity mean like that everyone is getting the same treatment. See that that area is okay, is has a already Ayushman, that PHC CHC, all you know na, the peripheral healthcare system. So and in that district there is no peripheral healthcare system. बट द तो हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब क्या है? हर जगह पे इक्वली ओके, इस एरिया पे भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, दैट एरिया में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इस एरिया में भी जितने आशा कर्मी है उस एरिया में भी इतना सेम आशा कर्मी है, इस एरिया में भी लोग इतने ड्रग सप्लाई उनको मिल रहा है, दूसरे एरिया में भी ड्रग सप्लाई उनको मिल रहा है.
ठीक है ना, कोई ऐसे छूट नहीं रहा है। जैसे सोशल जस्टिस इक्विटी, कि सबको मिल रहा है मेडिसिन एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स that actually I have told that elements, okay, focus on consumer, intensive use of information, population perspective, कि population perspective इस एरिया में कितना population है, मुझे कितना ड्रग सप्लाई चाहिए, कितना आशा कर्मी चाहिए, कितना हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सारा वो जो है कि इस एरिया में ठीक है मैं एक जेनेरिक स्टोर में रख देती हूँ, इतना पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन के लिए 2 जेनेरिक स्टोर चाहिए, फिर 2 पीएससी चाहिए, या फिर इतना आशा कर्मी चाहिए, इतना हेल्थ वर्कर चाहिए, ठीक है ना, ऐसा है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, reconsideration of human values, expectations of accountability, growing interdependence. Okay, anyone have any doubts in these points? You can ask. Okay, let's move. See, organization of health services, central level, state level, district level. Okay, see, Union Ministry of our Health and Family Welfare System that has divided into these 2 parts, Department of Health and Department of Family Welfare. Okay, in Department of Health, that first to secretary, then joint secretary, deputy secretary, administrative staff. Then in Department of Family Welfare, also secretary, एडिशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी। अब आप मुझे ये पूछोगे मैम हम लोगों को ये सब जानने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, वाई शुड वी नो ऑल दिस पॉइंट्स एंड थिंग्स। ओके, एक्चुअली ना जब भी कोई न्यू प्रपोजल आता है, ठीक है, कि ठीक है इस एरिया में हम लोगों को ड्रग सप्लाई बढ़ाना होगा, पॉपुलेशन बढ़ गया है, ठीक है, और इस एरिया में कोई एपिडेमिक एंडेमिक हुआ है, लाइक डेंगू। Few days back, actually, we have seen a few cases of dengue from that part. I don't remember right now that part. Shonamura, from that Shonamura. तो उस वक्त अगर हमें कोई प्रपोजल के लिए इस एरिया में एपिडेमिक एंडेमिक डेंगू कुछ भी हुआ है तो हमको लाइक इवैल्यूएशन करना है basically actually we have to inform them ना, that department wise, that's why we should know कि okay सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके बाद मुझे कौन सा डिपार्टमेंट पे एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, that's why एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम प्रोसेस कर सके। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया में जो मेनली पॉइंट्स है, ठीक है, दैट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या है, दैट आशा वर्कर, okay, you all have to know this, the function of asha worker, okay, ये important question है, एग्जाम में आ सकते हैं। that ऐसे short notes भी आ सकते हैं, rural healthcare system in India, okay। see, community participation is also important, okay, like रोगी कल्याण समिति, महिला आरोग्य समिति, ऐसे शॉर्ट नोट्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। तुम कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आना, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकते हैं, तो इट विल बी मोर इजियर। एक्चुअली ना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर इन हेल्थ केयर सिस्टम, लाइक एग्जांपल एनीमिया मुक्त भारत। I don't know any of you one like heard these things. Anemia Mukt Bharat. 6 departments basically working together. Okay, that integrated child development services, Ministry of Women and Child Development, and Ministry of Health and Family Welfare. All together they work for that Anemia Mukt Bharat mission. Then also we need help of technology in this field. Okay. How to help them with the help of the technology actually. All you heard about that NRHM, National Rural Health Mission. So this is also an important part. It also come in question like as a short note, in broad question also it will may come. See, now we'll discuss about the divisions
like in sub center, public health center and community health center and district hospital. Okay, the number of doctors, the number of health workers in public. See, first sub center. Okay, see, in sub center means there will be a population of 3,000 to 5,000. Okay, then public health center, PHC. Okay, public health center, there will be a population of 30,000. Three medical officer we need, three minimum, three medical officer we need in PHC, peripheral health center. तुम लोग जब सेकेंड ईयर में जाओगे तब तुम लोगों को आई थिंक PHC CHC सेंटर विजिट करवाएंगे. And healthcare staff, there are at least 13 to 14 healthcare staff. This is very important. It will come in exam. That point, like that primary healthcare center, community healthcare center, in district healthcare center, कि वहाँ पे कितना medical officers होना चाहिए, कितना health worker होना चाहिए. Can anyone give me an example community health center in our Tripura where it is situated in? Anyone? Have you went to that Mohanpur, Shidhai Mohanpur? That in Mohanpur there is a community health center, CHC. In our UG days, we used to go there and do duties. See, community health center में जो number of doctors, specialization doctor वहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि medicine, surgery, gynecologist, pediatrician, anesthesiologist, ophthalmologist. Okay, then pharmacist, laboratory technician, that lab technician, OT technician, ये सब होना चाहिए, and more than 30 beds. तो हमने क्या पढ़ाया? Public health center में 4 to 6 bed and 3 medical officers. But community health center में we need specialization doctors and more than 30 beds. And basic healthcare workers, there should be 40 to 46. In district hospital, so all you know that our GB, more than 80 beds. That Tripura Sundari Hospital in that Udaipur, clinical specialist, specialization laboratory, वहाँ पे सब जो डॉक्टर्स होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए. ठीक है. Then I told you before that ASHA worker is important for you. What are the functions of ASHA worker? That is a repeatedly asked question. Developed by NRHM in year 2005. ठीक है. आशा कब से स्टार्ट हुआ है? From 2005. NRHM. Okay. नेशनल रूरल हेल्थ केयर सिस्टम. देन आशा वर्कर में कौन से फीमेल अप्लाई कर सकते हैं? एज 25 to 45 year old female, they can apply for ASHA worker. Okay. Educational criteria 10th graduate. Minimum is 10th graduate. इससे ज़्यादा भी हो सकता है. Married, divorced or widow, any woman can apply for this ASHA worker. Permanent residence of that village. जिस विलेज का आशा वर्कर के लिए अप्लाई किया है. हम लोग आशा वर्कर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? वाई शुड वी नो अबाउट दैट आशा वर्कर? क्यों दिस पॉइंट इज टू मच इम्पोर्टेंट दैट वी शुड स्टडी? सी, तुम लोग जब ऑल यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ना, तो तुम लोग जब किसी विलेज में CHC में फ्यूचर में पोस्टिंग लोगे ना, तो तुम्हारे पास अब कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन पेशेंट आए, ठीक है, तो तुम एक चीज तुम नोटिस करोगे कि वहाँ के एरिया, उस एरिया में जिस एरिया से वो पेशेंट आया है, उस एरिया में तुम पहले वो पेशेंट तुमको ये पूछेगा, मैम, तुम बोलोगे कि तुम तो ये हिस्ट्री पूछोगे ना, अब तक से तुम कितने सारा मेडिसिन ले रहे थे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम टेबलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो तुम ये पूछोगे कि कैल्शियम टेबलेट तुम ले रहे थे, आयरन फॉलिक एसिड तुम ले रहे थे, तो पेशेंट तुम्हें ये बोलेगा, मैडम मैंने तो बीच बीच में स्किप किया है आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट लेना, क्योंकि मेरे एरिया में जो आशा वर्कर है उसने तो सप्लाई नहीं किया. ठीक है, तो तुम ये इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि उस एरिया में जो एक्चुअली आशा वर्कर का ये
वर्क है कि वो जो एरिया में पोस्टेड है वहां में जितना प्रेग्नेंट वुमेन है, कितने सारा प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना महीना चल रहा है, वो लोग आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट ठीक से ले रहा है कि नहीं, ठीक है। और जैसे कि अगर प्री टर्म डिलीवरी, इन केस ऑफ टर्म डिलीवरी, वो लोग उनको वो सम कि नहीं, ये काउंसलिंग कर रहा कि नहीं कि तुम्हें अभी रेस्ट करना होगा, आयरन फॉलिक एसिड ठीक टाइम से लेना होगा, 3 मंथ के अंदर अंदर डॉक्टर को विजिट करना होगा, अल्ट्रासाउंड करना होगा। तो हम लोग तो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, हम लोग तो पेशेंट को ये बोलते हैं, और आशा वर्कर क्या करते हैं, हम उन लोगों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो लोग हर घर घर जाके उन लोगों को ये बोल सके, बता सके ये कि नहीं, आपको इस महीने में अगर आपका 3 महीना चल रहा है तो आपको अभी आयरन फॉलिक एसिड स्किप नहीं करना होगा। आयरन एक्चुअली क्या है ना, आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट स्किप करने से ना एक माने कॉन्जेनिटल डिजीज हो जाता है बेबीज को। ये हम लोग तो पेशेंट को ये समझा देंगे, बट आशा वर्कर जाके जाके जो वो जो आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट सप्लाई करते हैं, उन लोगों का मेन काम है कि हर घर घर जाके वो मेडिसिन सप्लाई करे। और हॉस्पिटल में आके ऐसे जो सीएचसी सेंटर, वो पेरिफेरल सेंटर है ना, वो आके एक डाटा सबमिट करता है कि मैम अभी तो इस एरिया में इतना इतना प्रेग्नेंट वुमेन है, मैंने इतना इतना उन लोगों को कितना मेडिसिन सप्लाई किया है, कितना इस वुमेन कब से कितना प्रेग्नेंट वुमेन उस एरिया में है, उन लोगों को एक डाटा शीट तैयार करना पड़ता है, फिर ये सबमिट करना पड़ता है कि कोई स्किप ना हो। Then functions, okay, that first the home visit health facility, maintains health records, that I actually told before कि उन लोगों को health records maintain करना पड़ता है, health records maintain करना बहुत important है, नहीं तो actually अगर उन लोगों को डाटा एक प्रिपेयर करके ये पीएचसी सीएचसी में सबमिट करना पड़ता है। क्योंकि फ्यूचर में ना जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन तुम्हारे पास आएगा कि मैम मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, जब तुम यूएसजी में देखोगे देयर इज अ कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है बेबी में, तुम ही उस पेशेंट को पूछोगे, तुम्हारा एरिया में आशा वर्कर नहीं था, तुमने ये क्यों आयरन फॉलिक एसिड स्किप किया है। आई हैव सीन ए लॉट्स ऑफ केसेस, लॉट्स ऑफ, दैट्स व्हाई फंक्शंस ऑफ आशा वर्कर इज इंपॉर्टेंट एंड वी आर स्टडिंग। कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तुमको ये पता होना चाहिए मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, तभी तुमको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ओ ना मैं ये टॉपिक पढ़ के मैं मैं इससे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं ये करूंगी, मैं ऐसे पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर पाऊंगी, ये टॉपिक जान के, ये टॉपिक पढ़ के। ये अगर इतना लाइक तुम खुद को जस्ट आस्क योरसेल्फ, ओके व्हाई शुड आई स्टडी दिस टॉपिक। Functions are divided into two forms according to the responsibility of concerning authority, that is one union list and concurrent list. Union list is international health relation and administration of port quarantine and administration of central institute, promotion of research through the research center, regulation and development of medical, pharmaceutical, dental and nursing progression, establishment and maintenance of the drug standards. Okay, in urban healthcare system, we are talking about urban healthcare system. We talked before that rural, now we are talking about urban healthcare system. First तो division, क्या क्या डिविजन है अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम में। अर्बन आशा वर्कर, एएनएम सेंटर, अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर, अर्बन कम्युनिटी सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सी इन अर्बन ASHA center there will be a population of 1000 to 2500 and households will be there 200 to 500 houses. ऐसे समझो in this area there are 500 houses. उन 500 houses के लिए उन 500 houses में 1000 to 2500 population है, और उस 1000 to 200 25,000 सॉरी 2500 पॉपुलेशन के लिए हमें आशा वर्कर कितना चाहिए,
Then urban public health center. There will be a population of, एक्चुअली पॉपुलेशन के बेसिस पे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि कौन किसको हम पेरिफेरल हेल्थ केयर सिस्टम बोले, किसको हम अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर बोले, ठीक है, और किसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोले, पॉपुलेशन के बेसिस में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो urban public health center, there will be a population of 50,000 and households will be 10,000. And then urban community health center, more than 2 lakhs population. Household 50,000, more than 50,000 population. And district hospital तो more than 10 lakh population, 5 to 7 lakh population. और population तो हर साल decrease भी होता है, increase भी होता है, all we know. What are the contents? So contents are basically, see, immigration and regulation of labor in the working fields, coordination with the states and other concurrent list में अब क्या क्या है देखो. Prevention of extension of communicable diseases, जो मैंने पहले बोला है, anyone can give me example any communicable disease, ये तो पता होना चाहिए. Communicable disease, anyone? Malaria, diarrhea. Prevention of food adulteration, control of drugs and poisons, vital statistics, labor welfare, economical social planning, population control and family planning, all are the concurrent list. It was set up by a presidential order on 9th August 1952 under Article 263 of the Indian Constitution. Chairman, the Union Health Minister, okay, and the members are the State Health Minister. See, also this point is also important, that Mahila Arogya Samiti, okay, how it forms actually. A group of females from urban and rural sectors then deal with the health, growth and development of children, okay, understand. Basically उन लोगों का फंक्शन क्या है कि वो लोग इस एरिया को ऐसे 10,000 पॉपुलेशन के लिए है, सपोज देयर आर 10 महिला आरोग्य समिति, तो इस 500 पॉपुलेशन के लिए जस्ट इमेजिन देयर आर 1 महिला आरोग्य समिति. तो इस एक घर में अगर 2 बेबीज है, लाइक उन लोगों का एज है 1 से 3 years, ठीक है, तो उन लोगों का बेसिकली ये काम ये है कि मदर को जाके ये इन्फॉर्म करना, ये काउंसलिंग करना कि उनकी बेबी के लिए अभी 1 month, लाइक अप टू 6 months देयर इज ए ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट, ऑल वी नो ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट अप टू 0 to 6 months. देन फ्रॉम 6 months कि बेबी को क्या क्या खाना देना चाहिए, बेबी को क्या क्या न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलना चाहिए, लाइक पोलियो ठीक से मिल रहा है कि नहीं, हर एक वैक्सीन ठीक से ले रहा है कि नहीं है, वी विल स्टडी. हाँ, धीरे उस टॉपिक में हम लोग जाएंगे. बेसिकली जो महिला आरोग्य समिति है उन लोगों का वर्क काम यही है कि बेबी इस घर में कितना बेबी है, बेबीज को कि मिल रहा है कि वैक्सीन ठीक से ले रहा है कि नहीं. Actually, voluntary organization that helps the grassroots level in health workers. एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों के बस में पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक हाउस में जा सके, हर एक घर में जा सके कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, जो लोग छोटे बच्चे हैं. तो उन लोगों का काम यही है मदर को जाके काउंसलिंग करना, दैट सोसाइटी को काउंसलिंग करना, अवेयर करना कि नहीं बच्चों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलना चाहिए और मिल रहा है कि ठीक से मिल रहा है कि नहीं. There are also other healthcare systems like National Health Mission (NHM) that is consist of NRHM and NUHM. NRHM is launched in 12th April 2005 and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to provide health insurance
that comprehensive primary health care, opening health and wellness centers, then integrated with sub-centers, and also community health officer, nursing officer at the center. They are the sectors, okay? Sectors of Ayushman Bharat scheme. First, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to provide the health insurance. Two is the comprehensive primary health care, opening health and wellness center, and CHO, community health officer, nursing officer at the center, and they integrated with the sub center. See, functions क्या है? Consider and recommend board outline of the policy, make proposal of the legislation in field in medical and public health, recommendations regarding the distribution of the available aid for the health purposes, establish the organization to maintain the cooperation between the central and state health department. Okay. See, then now the director of the general health services. First, the deputy medical care, then deputy public health, then deputy general administration, nursing advisor, and deputy nursing advisor. Then what are the functions? First, the general and specific. Generals are the like survey, planning, coordination, programming, okay, then appraisal of all health matters. Then specific are the international health relation, control of drug standard, as I told before na, control of drug standards, medical stores reports, राइट, यहाँ पे कितने जेनेरिक मेडिसिन का स्टोर है कि उस एरिया में, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, medical education, medical research, central government health scheme, national health programs, central health education bureau, then health intelligence and national medical library. In state level, there are state ministry of health and state health director. State ministries of health are health secretary, additional secretary, deputy secretary and administrative staff. डिपार्टमेंट सबको पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट पहले है, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट है, ये पता होना चाहिए. Functions. See the functions. Assisting the ministries in policy making, formulation, review and modification of broad policy, execution of policies, coordination with the government of India and other states, then control for smooth and efficient functioning, then budgeting and control over expenditure. स्टेट हेल्थ में क्या क्या होना चाहिए? फंक्शनल डेप्यूटी डायरेक्टर एंड रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर्स. देयर द थ्री डिपार्टमेंट्स की पहली है फंक्शनल डेप्यूटी डायरेक्टर, उनके अंडर होता है रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर, उनके अंदर होता है एडिशनल डायरेक्टर्स. फंक्शंस प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल केयर. उन लोग का काम क्या है? बेसिकली इतने सारा डिपार्टमेंट्स है, इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग फंक्शन क्या है, वो लोग क्या करते हैं. देन द फर्स्ट, द प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल केयर. उस एरिया में कि एडिक्वेट मेडिकल केयर लोगों को मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए. देन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, okay, then national health program and implementation, provision for health scheme कि अभी कोई new health scheme proposal कर सकते हैं कि नहीं, what will be the better option, और already जो health scheme on there अभी है वो लोग apply हो रहा कि नहीं, लोगों को मिल रहा कि नहीं. Then contents are the food and drug administration control, कलेक्शन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन कि इस एरिया में कितने डायबिटिक पेशेंट है, इस एरिया में कितने हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, तो बोलो कि ये डाटा प्रिपेयर करते हैं. देन कंट्रोल ओवर ईएसआई स्कीम, देन एनफोर्समेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. देन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में क्या क्या लेवल आते हैं, क्या क्या डिवीजन आते हैं, सब डिविजन, तहसील, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, देन विलेजेस, देन पंचायत राज.
एंड इन अर्बन एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे तो पहले कॉर्पोरेशंस, देन म्यूनिसिपल बोर्ड्स, देन टाउन एरिया कमिटी. Functions of municipal boards: construction and maintenance of roads, sanitization and drainage, street lighting, public health, maintenance of hospital and dispensaries, education and the registration of births and deaths. These points are very important. Why they have told that sanitization and drainage? Why this point is important? अब सी एक एरिया में डेंगू का आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, मलेरिया का आउटब्रेक हुआ है, तो हम ये चेक करना पड़ेगा ना कि वहाँ के सैनिटाइजेशन एंड ड्रेनेज ठीक है कि नहीं, क्योंकि मॉस्किटोस तो ज्यादातर वहीं पे रहते हैं. पंचायती राज फर्स्ट तो इन विलेज एक्चुअली पंचायती राज उनके अंदर होता है पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, देन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. तो बेसिकली एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया फर्स्ट तो विलेज लेवल, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. ओके, ये याद रहना पड़ेगा सब मेडिकल स्टूडेंट को. ये दिस इज द कॉमन बेसिक थिंग ऑल यू हैव टू नो. देन प्राइमरी हेल्थ केयर, अगर कोई पूछे ना व्हाट इज द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ऐसे ही रैंडम में अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम ये पता, देयर आर फोर टाइप्स बेसिकली इन विलेज लेवल, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. So, in village level, village started in 1977. Now it is replaced by ASHA. Actually, I told before that. Then training of local जो है health workers है, started under rural health scheme. Training of local days for 30 days. Now not preferred. Actually, ये बहुत पहले का स्कीम था. और आशा तो अभी is ongoing. आशा जो मैंने पहले बोला था कि advent with NRHM per 1000 population, important link between the community and health services. Actually, see, ASHA worker, they are the important link between the community and health services. Then AWW under ICDS for every 400 to 800 population. See, slide to तारा पाए माने all of you like हाँ just click a picture this point, this is important. हाँ, it may like it actually it will come in exam that ASHA is very important. The function of ASHA worker. You clicked na all of you. See, sub-center level, it is the peripheral outpost of the existing healthcare delivery system in rural areas. They are being established on the basis of one sub-center for every 5,000 population in general and one for every 3,000 population in hilly, tribal and backward areas. Okay? Currently, a sub-center is staffed by one female health worker known, then auxiliary nurse, midwife one, then one male healthcare worker, one health assistant known as the lady health visitor. सब सेंटर लेवल में कौन कौन काम करता है एक्चुअली, सब सेंटर लेवल में कौन कौन होना चाहिए? वन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, वन मेल हेल्थ वर्कर, देन वन हेल्थ असिस्टेंट नोन एज द लेडी हेल्थ विजिटर, वन फीमेल हेल्थ वर्कर. Functions: maternal and child health, family planning, immunization, nutritional services, control over communicable diseases, records of vital statistics. See, records. Maintaining records is important कि इस एरिया में कितना पेशेंट आ रहा है, उन लोगों का कितना डायबिटिक पेशेंट है, कितना हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कितना प्रेग्नेंट वुमेन्स है, कितना अगर यहाँ पे कुछ लाइक डेंगू आउटब्रेक या फिर मलेरिया आउटब्रेक हुआ है कि कितना पेशेंट है, उन लोगों को ये मेंटेन करना होता है. एंड इम्यूनाइजेशन एंड दैट फैमिली प्लानिंग
and that nutritional services. Okay. Primary health center concept of PHC was given by the board committee. One PHC for every 30,000 population in plain area and for 20,000 in hilly area. So one PHC for every 30,000 population in plain area, okay, and for 20,000 in hilly area. See, that point is important कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कितने पॉपुलेशन के लिए कितना होना चाहिए. 30,000 के लिए one peripheral health care system, okay, and in plain area and in hill area to 20,000 population और more than 20,000 population के लिए एक PHC होना चाहिए. Functions. See the functions. One is the medical care, MCS and family planning, safe water supply and basic sanitization, prevention and control of disease, collection and reporting of vital statistics, education about health, national health program involvement, training of health workers. See the staffing of peripheral healthcare system. See, मेडिकल ऑफिसर MBBS एसेंशियल एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम वन मेडिकल ऑफिसर शुड बी देयर. ओके, देन मेडिकल ऑफिसर आयुष में भी एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए. देन अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर वन. देन फार्मासिस्ट इन आयुष वन. नर्सिंग स्टाफ there should be 3 nursing staff. Okay, type A or type B में 4 nursing staff. Then in health worker female 1, type A, type B 1. Health assistant male health assistant type A 1 and type B 1. Then health educator 1, health type A 1 and type B 1. Laboratory technician is also the type A1 and type B1. Then cold chain and vaccine logistic assistance 1. ये cold chain and vaccine logistic assistant क्या होता है? जो लोग पोलियो घर घर में जाके पोलियो बच्चों को देता है, ठीक है? Then multi skilled group D worker, sanitary worker come watchman, total 13. Type A type A 18 and type B 21 worker. तो distribution of staffing in peripheral healthcare system actually. Okay. Community health center. The block is unit of rural planning and development and comprises about 80,000 to 1.2 lakh population. One community health center is being established in each block. You got that point now? One community health center is being established in each block. Okay, do you know that block? Each block में एक community health center होना चाहिए. The officer in charge of CHC is known as the superintendent CHC or block medical officer. Okay, normally one CHC should have more than 30 bed hospital. उस CHC में एटलीस्ट 30 बेड होना चाहिए. 30 बेड इज मिनिमम रिक्वायरमेंट. हाँ, 30 से ज्यादा भी हो सकता है, बट 30 बेड होना चाहिए. दिस इज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट. सी स्टाफिंग ऑफ CHC, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट. ओके, क्वालिफिकेशन senior most specialist, GDMO preferably with the experience is the public health and trained in professional development. Okay, then remarks will be responsible for the coordination of NHPS, management of ASHA's training and their responsibilities under NRHM apart from overall administration of management of CHC etc. He will be responsible for the quality and protocols of the services delivery being delivered in
CHC. Okay, as I told before, see the training of ASHA worker. Actually, that they will organize the basic. They will give the train to ASHA worker how to actually what works to do. Their वो कैसे घर घर में जाके like mothers को pregnant women को कैसे counseling करे वो लोग ये basically वो लोग ये training देता है. देन हेल्थ रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकता है, इस एरिया में कितने प्रेग्नेंट वुमेन है वो हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना. देन पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एमडी पीएसएम. देन एमडी पीएसएम मींस MBBS MD इन कम्युनिटी मेडिसिन. ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कम्युनिटी मेडिसिन. देन MD कम्युनिटी मेडिसिन सी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ MBA DPH एंड MPH. देन नर्स भी होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ नर्स one will be sufficient. This slide is visible to everyone now. Okay. Specialty services, general surgeon 1, physician 1, obstetrics and gynecologist 1, then anesthetist 1, then dental surgeon 1, general deputy medical officer 2, and medical officer 1. Medical officer in Ayush, Ayurvedic medical officer, there will be one, there should be one Ayurvedic medical officer, okay? And staff nurse will be 10, at least 10 staff nurse we need in PSC, sorry in CSC. Then pharmacist, one pharmacist and one pharmacist in Ayush. Lab technician 2 and then radiographer. See, radiographer you know now, like, okay. Dietitian 1, ophthalmic assistant 1, dental assistant 1, cold chain vaccine logistic assistant 1, OT technician 1, multi rehabilitation community based rehabilitation worker 1. Okay, registration clerk, administrative staff actually, registration clerk 2, then account assistant 1, administrative assistant 1. Then group D staff, dresser, then ward boys, driver, total 46, 52. Functions. See, functions are the care of routine and emergency 24-hour delivery services, essential and emergency obstetric care, full range of family planning services, safe abortion services, newborn care, routine and emergency care for sick children, foreign body removal, tracheostomy, etc. Implementation of national health programs. Basically, implementation of national health programs. Okay. Okay. Thank you all.